Hi everyone, this is my second video on YouTube, and I am software developer having 3 years of experience, 3+ year of experience. So today we'll start with new problem, and the problem is like you are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed, and the only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night, right? So like we have given the array of number which basically represents the amount of money in each house, right? So we have to return the maximum amount of money a robber can rob without alerting the police, right? So यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे है कि ये हमारे पास एक दो तीन चार चार हाउसेज हैं, वी हैव 4 हाउसेज, एंड हर एक हाउस में दीज अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है. लाइक फर्स्ट हाउस में वो मनी इतना अवेलेबल है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये. और एक रॉबर है, वो क्या कर रहा है, इन हाउसेस को रॉब कर रहा है इन सच अ वे कि वो किसी दो एडजेसेंट हाउस को रॉब नहीं कर सकता. इफ़ ही विल डू दैट, then we will send a alert to police, right? So हमें वो चीज़ नहीं करना है, अलर्ट नहीं भेजना है पुलिस को, एंड रॉबर को हाउस ऐसे रॉब करना है सच डैट ही कैन कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस हाउस. तो मतलब जैसे मान लो कि अगर ये इस हाउस से रॉब करता है, देन द रॉबर विल नॉट एबल टू रॉब दिस हाउस बिकॉज ये इसके एडजेसेंट है. ये रॉब करेगा तो पुलिस के पास अलर्ट जाएगा एंड देन वो पकड़ा जाएगा, ठीक है. तो या अगर ये रॉब करेगा देन ही विल बी एबल टू रॉब दिस हाउस, राइट. सो अगेन ये रॉब करेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो अगर ये रॉब करता है तो कितने मनी कलेक्ट कर पाएगा, 4 कलेक्ट कर पाएगा, विच इज़ आई थिंक मैक्सिमम. बिकॉज सपोज ये रॉब करता है सेकेंड हाउस, तो he will not able to rob the previous one and the next one, right? Then he will rob the last one. So 2 plus 1 is equal to 3. He will collect maximum 3 money from all the house, right? So problem तो I think clear है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. सो रही अप्रोच की बात, तो हम यहाँ पे फिर से रिकर्सन का इंट्यूशन आ रहा है. बिकॉज हम कोई भी इंडेक्स पे खड़े हैं, किसी भी हाउस के पास खड़े हैं, सो वी हैव 2 choices. आइदर वी विल कंसिडर इट इन आवर रिजल्ट सेट और विल नॉट कंसिडर इट इन आवर रिजल्ट सेट, राइट. अगर मैं इस पे खड़ा हूँ, सो आइदर आई विल कंसिडर दिस इन आवर रिजल्ट सेट, विल अज्यूम कि रॉबर ने इसको रॉब किया. इफ़ आई विल कंसिडर दिस इन आवर रिजल्ट सेट, then what I will do, I will basically increase my counter with I plus 2, not I plus 1, because I will not be able to rob this house because I have already robbed this house, the first one, right. If I do not consider this in our result set, then we are able to rob this house, the next house. Then in that case we'll increase the counter by 1 only. तो मैं उस समय I को I plus 1 कर दूँगा, ठीक है. So as I mentioned, we have 2 choices on each index. Either we can rob that or will not rob that. If we will rob that, then we'll increase the counter by 2. If not, then we'll increase the counter by 1, and then we'll find the maximum of those 2 recursion and will return it, right. So first what we will do, we will basically approach with recursion and then we'll memorize it, because यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो रहा है सब प्रॉब्लम रिपीट्स हो रहे हैं, तो हम रिकर्सन वाले रिजल्ट को कैश करेंगे एंड समहाउ हम किसी एक पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम पे लाई करते हैं जो ऑलरेडी हमने उसके रिजल्ट कैलकुलेट कर रखे हैं. देन हम उस डीपी से उसको रिटर्न कर देंगे जहाँ पे हमने उसको मेमोराइज कर रखा है, ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्सन पार्ट, देन विल मूव विद मेमोराइजेशन पार्ट. So this is my length of array, okay, and will return max
pass this array. Okay, and so if what will be the base condition in recursion, because in recursion for stopping or recursion condition there should be a base condition. So what will be the base condition in our case? So when n will become n less than 0, okay, then in that case there is no house, right? So robber will not able to rob anything, right, from those houses, because house are not available, right? So in that case we'll return 0. And if and then what we'll do, we'll return math dot max, because we have to return max, right? Maximum amount of money that robber can rob from those houses, right? So as I mentioned, we have two choices on each index, right? So first let's consider that robber basically उस जिस इंडेक्स पे खड़ा है उस हाउस को रॉब किया. इफ उस रॉबर ने रॉबर ने उस हाउस को रॉब किया, देन क्या कंडीशन बनेगा? तो रॉब करने के बाद उसके पास ये मनी आ जाएगा, नम ऑफ एन, राइट, दैट रॉबर हैज़ कलेक्टेड दिस मनी फ्रॉम दैट हाउस. एंड देन क्या होगा? सो यहाँ पे my index will be updated by n-2, not n-1, because the robber has robbed that house. So वो adjacent वाले को rob नहीं कर सकता है, ठीक है? And the other condition, robber ने उस house को rob किया ही नहीं, उसने बोला कि मैं next वाले को rob करूँगा. Then in that case what we will do, we'll simply move the counter by 1, right? So this will be our simple basic recursion, and I think if we will submit this code, we'll definitely give time limit exit, because the code is not optimized. Let's see. Yeah, you can see here it's giving TLE, right? So what we can do, we will use memoization for optimizing it. We'll use DP, we'll initialize the DP with the -1, right? We'll pass it in function params. We'll check if dp of n not equal to -1, because I have initialized this dp with -1, and if the dp of n is not -1, it means we have already computed the result for that index, right? So हम simply वहाँ से return कर देंगे, return dp of, ठीक है, and we'll store the result of these recursion in dp of n. Yeah, so this will be the recursion condition. If you will submit this, then definitely will get submitted. Let's see. Okay, yeah, here we need to pass dp in a function params. Let's run again. Yeah, now it's got submitted. So like, yeah, this is the code, and for the complexity part, the code will be for the space complexity it will be O of n, because we are using one extra dp,
And for the time complexity, it's again O of n, because as I mentioned in the previous video, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, देन विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है विच इज़ n, बिकॉज n इज चेंजिंग राइट ऑन ईच रिकर्सन कॉल. सो या द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी O of n. या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. कोई भी इशू आता है देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, and please do follow and subscribe for more videos. Bye.